Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my YouTube channel. This is Abdul Sami, and you are watching Multi Sessions Dabba. Today, we are going to start our new subject, which is called Functional English. So, in which we will be studying about English language, and today's topic is what is a sentence and the kinds of sentences. So, sentence. It is a group of words which makes complete sense. Is called a sentence. अगर आप वर्ड्स को मिलाएं कुछ वर्ड्स को मिलाएं और उनसे कोई मीनिंग निकालें तो उसको कहते हैं सेंटेंस लाइक फॉर एग्जांपल एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर ले जाएगा जैसे अगर आप एप्पल खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो सो दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सेंस सो kinds of sentences there are four kinds of sentences. Number one is declarative. A declarative sentence makes a statement. It ends with a full stop. Uh, like for example, he likes pepperoni pizza. So declarative sentence वो sentence होता है जो complete statement बनाए मतलब sentence तो complete होगा लेकिन एक statement बनाएगा जिसके end में full stop दिया है आप ऐसे indicate कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आया वो डिक्लेरेटिव होगा जो एक स्टेटमेंट बनाए लाइक द अम्ब्रेला इज ग्रीन मिस स्मिथ इज अ टीचर ओके एंड द सेकंड kind is interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question, it ends with a question mark. एक interrogative sentence का मतलब ये होता है कि ऐसा sentence जो questions पूछे जो क्वेश्चन पूछे जिसके अंदर सवालिया निशान भी हो आप कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये इंटेरोगेटिव है you will find an question mark at the end of the sentence okay like do you like pepperoni pizza क्या आपको पेपरोनी पिज्ज़ा पसंद है तो ये क्या सवालिया निशान है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये सेंटेंस तो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसकी दूसरी एग्जांपल्स भी ये हैं हैव यू सीन माय अम्ब्रेला क्या आपने मेरी अम्ब्रेला को देखा दिस इज अनदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु इज योर टीचर and the third kind is exclamatory sentence. An exclamatory sentence shows a strong feeling. It ends with an exclamation mark. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सेंटेंस जो अपनी फीलिंग को जाहिर करे उस सेंटेंस में अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे जैसे हुर्रे हुर्रे का मतलब एक्साइटेड होना जब भी आप एक्साइटेड होते हो तो हुर्रे बोलते हो इन इंग्लिश मतलब जैसे अगर आपने अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए तो आप हुर्रे करेंगे ना मतलब एक्साइटेड फीलिंग एक्साइटेड होगे तो उसको एक्सक्लेमेटरी निशान भी होगा जैसे हुर्रे के साथ एक एक्सक्लेमेटरी निशान यहाँ लगा हुआ भी है ये रहा इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये सेंटेंस या वर्ड एक्सक्लेमेटरी है या नहीं जैसे कि वाओ वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ तो इस सेंटेंस में भी दो एक्सक्लेमेटरी साइंस हैं तो आप इससे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी है एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है लेकिन ये कमांड देता है जैसे कि गो टू योर रूम लाइक टीचर आपको क्लासरूम में कहेगी कि गेट आउट ऑफ द क्लास गेट आउट फ्रॉम द क्लास तो व्हाट इज दिस he commands you ठीक है थ्रो मी द बॉल आप मेरे पास बॉल फेंको क्या ये क्या है कमांड है आपको कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ करो बॉब प्लीज क्लोज द डोर क्या बॉब क्या तुम दरवाजे को बंद कर सकते हो क्या है ये imperative sentence which gives you a command okay the practices so this sentence shows that it is an interrogative sentence. How come it become an interrogative? Because it ends with an question mark. ये question mark से
एंड हो रहा है और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू गोइंग टू द मूवी टुनाइट? क्या आप मूवी देखने जा रहे हैं आज रात को? तो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी है, तो आप डायरेक्टली इंटेरोगेटिव के ऊपर लेंगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ ग्रेट मूवी दैट वाज। तो आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, क्या कौन सा काइंड है सेंटेंस का? दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी। हाउ कम इट becomes an exclamatory? Because it shows the exclamatory sign at the end of the sentence. Okay, there are many different kinds of animals at the zoo. This is an declarative sentence because it makes a statement. Okay, open the chapter 5 of your maths book. What is it? It's an imperative. It commands you. Okay, Bob has an iPod. This is an statement, so it's an declarative. Be careful with your iPod. What does that mean? He or she commanding you that be careful with your iPod. Okay, iPods are amazing. तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिखा रहा है एंड में, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो यू हैव एन आईफोन, ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव। प्लीज पास द सॉल्ट एंड पेपर। क्या ये क्या कह रहा है, कमांड दे रहा है आपको, क्या मुझे सॉल्ट और पेपर पास कर दो। ठीक है, इट इज़ सनी आउटसाइड। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये डिक्लेरेटिव होगा। आर यू प्लानिंग टू ट्रेवल ड्यूरिंग योर वेकेशन? ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंटेरोगेटिव होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इट्स एन अनदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वुड यू लाइक टू गो टू द बीच विद मी? क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे बीच में? तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, आपसे पूछ रहा है। ओके, in this paragraph, how can you find all the kinds of sentence? My favorite type of food is pizza. I could eat pizza morning, noon, or night. Pepperoni is my number one choice. I also like double cheese on top. I wish I could order a pizza right now. So how can you define all the kinds of sentences? So what is your favorite type of food? Fast food. सो ये हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव आ जाएगा। माय फेवरेट इज पिज्ज़ा एंड देन आई जस्ट लव पेपरोनी एंड डबल चीज। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये डिक्लेरेटिव है। एंड समटाइम्स आई थिंक आई कुड ईट पिज्ज़ा मॉर्निंग, नून एंड नाइट। ऑल ऑफ दिस टॉक अबाउट पिज्ज़ा इज मेकिंग मी हंग्री। सो व्हाट इज दैट? इट्स एन स्टेटमेंट। लेट्स ऑर्डर अ पिज्ज़ा नाउ। ठीक है, एक कमांड है। ओके, सो अब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। हाउ कैन वी फाइंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट? लेट्स हैव अ लुक। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी डू two things. Number one is that we name some person or thing and then say something about that person or thing. In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predict something about that subject. Like जैसे कि सॉरी जैसे कि अली इज अ ग्रेट पर्सन। तो क्या अली इज अ सब्जेक्ट एंड अ ग्रेट पर्सन इज समथिंग टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, टेलिंग अबाउट द अली। अली एक अच्छा बच्चा है, तो क्या अली एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या होगा, अच्छा बच्चा। उसके बारे में बता रहे हैं। प्रेडिकेट मीन्स कि आप सब्जेक्ट के बारे में बताएं, और सब्जेक्ट क्या होगा, एक कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। So another thing is that the subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate as. ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में ही आए, किसी किसी सेंटेंसेस में वो एंड में भी आ सकता है। जैसे कि हेयर कम्स द बस, क्या शुरू में क्या आया, प्रेडिकेट आया, बस के बारे में पहले ही बता दिया।
सब्जेक्ट से पहले ही प्रेडिकेट बता दिया, तो मतलब हेयर कम्स अ बस। बस एंड में आई, बस का क्या है, बस सब्जेक्ट है, हेयर कम्स अ बस। ओके, इन imperative सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। अब imperative सेंटेंस में सब्जेक्ट लेफ्ट हो जाता है। imperative का क्या मतलब था? imperative का मतलब ये था कि आप कमांड दें, ठीक है। तो कमांड जब भी देते हैं फिर हम उसमें सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं। जैसे सिट डाउन, जैसे इसमें लिखा हुआ है सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इसके अंदर पहले ही पता होता है कि भाई आपको ही कहा जा रहा है कि आप बैठ जाएं। जैसे थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, आप शुक्रिया कहें उसे। तो मतलब क्या, आप यू इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट जो है मिस हो जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस में। लाइक द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बॉय, और प्रेडिकेट क्या होगा, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ही हैज अ गुड मेमोरी। अब ही क्या होगा, ही सब्जेक्ट होगा, and has a good memory is predicate. He is talking about the he. Okay. On the top of the hill lives a hermit. अब ये देखें, अब ये आ गया सब्जेक्ट एंड में आ गया और प्रेडिकेट शुरू में आ गया। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल में कौन रहता है, hermit रहता है। hermit क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसके अंदर दो सब्जेक्ट आ गए। आपके पास दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं एक ही सेंटेंस में, जैसे कि अर्थ है और एक सन है, दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू अंडरस्टैंड एंड लर्न something about from my video, so do like, comment and subscribe and share too with your friends and family. Thank you very much. Allah Hafiz.